climate change. It is well accepted that this will necessitate adoption of multiple alternative energy pathways. Ethanol is an indigenous, carbon neutral, and clean energy source. It has a huge potential to reduce fossil fuel consumption, the import bill, and carbon emissions. Being agri-based, ethanol can help double farmers' incomes, create new jobs, and develop a rural economy. Further, in addition to generating government revenue from surplus sugar and food grains, the agri-residues that are currently burnt and produce severe pollution can be converted to ethanol using second-generation technologies to create wealth from waste. With government efforts, India has made big strides in ethanol supply. We have reached 10% ethanol blending in the shortest time and will achieve 20% by 2025. E20 implementation is expected to substitute 86 million barrels of gasoline, help save rupees 30,000 crore foreign exchange, and reduce 10 million tons of carbon emission. I must compliment Minister Gadkari on this. He has pushed all of us all the time. You have to change, and sir, we will follow your direction as we go ahead. Thank you, sir. As India will have excess ethanol beyond 20% blending, these benefits can be increased multifold with higher ethanol usage by utilizing flexi-fuel hybrid electric vehicles. These technologies can flexibly use higher ethanol blends and on a well-to-wheel basis, have the lowest carbon emissions amongst all technologies. Further, flexi-fuel hybrid electric technology will not only promote higher ethanol use, but will also facilitate creation of a manufacturing ecosystem for electric powertrains as it has both the powertrains. We believe that carbon emission is the real enemy for which rapid reduction in fossil fuel consumption and a holistic well-to-wheel approach is needed. Toyota has developed all clean technologies and believes in introducing these based on each country's unique requirements to maximize the reduction of fossil fuel and carbon emissions in the fastest possible time. In this direction, today we are launching the pilot project on flexi-fuel strong hybrid electric technology with threefold objectives of development, assessment, and awareness creation. As a key part of this project, the data collected will be used for India-specific developmental activities. Further, this will also be shared with the prestigious Indian Institute of Science and other key stakeholders for conducting deeper studies on well-to-wheel carbon emissions in the Indian context. Towards this, we are signing an MOU with the Indian Institute of Science. We feel more awareness is needed on benefits of ethanol energy pathway for India and the tremendous possibilities of flexi-fuel hybrid electric technology, which can provide the dual benefit of enhanced fuel efficiency from electrification and higher petrol substitution by ethanol. This project also aims to address this issue. I think it's very important as we go ahead towards addressing climate change, reduction in carbon, that we use full scientific data and research by premier institutions like Indian Institute of Science to decide policy for the country on the long run so that we do meet the PM's objectives of reduction in imports and energy self-sufficiency. Scientific data with scientific research with good data will enable policy to work on a long-term basis. We strongly remain committed to effectively contributing towards the vision of an energy-independent India through various pathways that can provide cleaner mobility for all. We are very grateful to the Government of India for their strong support in this regard.
Thank you very much. Thank you very much, Sri Vikram Kirloskar ji, for that wonderful address. Ladies and gentlemen, we will now play a brief video about the ethanol energy pathway, its potential for India, along with an introduction to flexi-fuel and flexi-fuel hybrid electric vehicle technologies. Let's play the video. World is going through an energy transition due to concerns on climate change and geopolitical issues. As India is the fastest growing major economy, these global challenges are even more severe for it. In 2021, India imported 85% of its crude oil requirements. Despite its lowest per capita CO2 emissions, India has the third highest emissions and is also impacted by adverse impacts of climate change. However, continued economic growth is must to improve quality of life for millions of Indians. Hence, India has to follow a sustainable growth model that balances economic growth and sustainability. The Honorable Prime Minister has set clear vision for us to become a global manufacturing powerhouse as well as to achieve Atmanirbhar Bharat in energy by 2047. The future where India is powered by local, renewable and clean energy, thereby reaching net zero emissions by 2070. A future where the fruits of economic development benefit all Indians and reach rural India. Transportation sector is the largest consumer of fossil fuels, and this offers huge potential for alternate fuel such as bioethanol. Ethanol is a good substitute for fossil fuel and is produced from renewable sources like sugarcane, cereals and agricultural waste. Further, its use in transportation does not require any new infrastructure setup. Being plant-based, ethanol has the lowest carbon emissions on a well-to-wheel basis and 0 PM2.5 emissions, which makes it environment-friendly. An indigenous clean energy source, higher ethanol use will boost agrarian economy by spurring rural investments and jobs. Globally, ethanol is being used as a fossil fuel substitute in many countries to their advantage. Brazil has the largest and most successful biofuel programs in the world and is considered to have the world's first sustainable biofuel economy. India is also well endowed with surplus sugar, sugarcane and food grains production. In 2021-22, for a straight fifth year, India will produce surplus sugar comfortably exceeding domestic demand. With global trade restricting, ethanol production is an important pathway for sugarcane value chain. Further, ethanol can also be generated from excess food grains that get wasted. Thus, it can also help derive economic value from this waste. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, India has achieved 10% ethanol blending 5 months ahead of schedule. This has saved precious forex, reduced GHG emissions and created wealth for farmers. Given the huge potential, government has also advanced ethanol blending target of 20% in petrol to 2025-26 by 5 years. In addition, under PM Jeevan Yojana, government is encouraging new 2G technologies which can derive ethanol from waste such as stubble. This will provide additional income to farmers and reduce problem of pollution from stubble burning every year. Since India has the potential of huge ethanol, India can learn from global experience of benefiting from use of flex fuel vehicle FFVs. Flex fuel vehicle technology provides greater substitution of petrol by ethanol as it can use higher blends of ethanol mix beyond 20%. As India is also encouraging vehicle electrification,
we can leverage advantages of both through the flexi-fuel, self-charging strong hybrid electric technology or flex hybrid vehicles. A flex hybrid vehicle has both a flexi-fuel engine and an electric powertrain, thus providing dual benefit of higher ethanol use and higher fuel efficiency. As flex hybrid vehicle use minimal advanced batteries, it also guards against future possible geopolitical risks associated with battery raw material supplies. Greater flex hybrid vehicles offtake can help retain existing ICE investments, create EV parts ecosystem, and give India global technology leadership. Flex hybrid vehicles provide higher fossil fuel saving and has the lowest carbon emissions on a well-to-wheel basis. As can be seen from Brazil experience, this is expected to be much lower in India as our farming is far less mechanized. As consumer acceptance is must for any technology introduction, hence suitable policy support is essential. With government support, it is possible for India to lead in introducing world's first BS6 D-compliant flex fuel and flex hybrid vehicles in near future. For Toyota, carbon is our biggest enemy. Our goal is to create a positive impact based on the principles of mobility for all and leave no one behind. It is our mission to reduce CO2 emissions as much as we can and as quickly as possible. Towards this, we will continue to provide cleaner technology options that are best suited to the unique energy mix, infrastructure readiness, and consumer acceptance of each country. As part of Toyota Environment Challenge 2050, we aim to reduce life cycle carbon emissions and achieve carbon neutrality not only through the vehicles we make, but also across our entire value chain that covers our manufacturing plant, our dealers and suppliers. We are fully committed to support government's efforts to reduce fossil fuel dependence. Lowering carbon emissions with a focus on making in India cleanest and advanced technologies not only for India but also for exports. Let's have a round of applause for this wonderful initiative, which I believe is going to be a milestone achievement in EV technologies. Now may I request Professor Govindan Rangarajan, Director, Indian Institute of Science, and Shri Sudeep Dalviji, Senior Vice President, Chief Communication Officer and Director of TKM, to kindly come forward for the official MOU exchange. Well, that deserves a huge and a louder round of applause. Thank you, Shri Rangarajan ji and Shri Dalvi ji, for doing the honors. Ladies and gentlemen, we are joined by Dr. Mahendra Nath Pandey ji, Honorable Union Minister of Heavy Industries. Thank you so much for joining us today, sir. I would request Shri Yoshimura ji to kindly felicitate Dr. Mahendra Nath Pandey ji with a beautiful potted plant. Thank you for joining us today, sir. And now, ladies and gentlemen, we have a video from our ministry. Let's have a look at the same. देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों वाला आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक और कदम पेश है। ये शुरुआत है नए भारत की, नई सोच, नई टेक्नोलॉजी के जरिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य देने की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के संकल्प ने आज इस पहले फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्च को मुमकिन बनाया है। ये भारत में टोयोटा का अपनी तरह का पहला पायलट प्रोजेक्ट है,
जिसके तहत देश में ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की नई राह बनाने की आस है। ग्रीन एनर्जी, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये पायलट प्रोजेक्ट नया नजरिया दे सकता है। जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक कारणों की वजह से दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें ऊर्जा यानी एनर्जी की बेहद अहम भूमिका हो जाती है और इसको लेकर चिंताएं भी हैं। वहीं भारत एक तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वजह से जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो भारत के लिए और भी अहम हो जाती हैं। ऐसे में जहां करोड़ों भारतीयों की जिंदगी में सुधार के लिए लगातार आर्थिक विकास की जरूरत है और ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण के हित में भी हो, इसी के लिए भारत को सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारित किया है। साल 2047 तक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भारत बनने का, और देश में इस काम में मददगार साबित होगा जीवाश्म ईंधन की जगह पर बायोफ्यूल का इस्तेमाल। जीवाश्म ईंधन के सबसे ज्यादा खपत वाले सेक्टरों में से एक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसी वजह से बायो इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के लिए ये सेक्टर बड़ी संभावनाएं भी पैदा करता है। इथेनॉल जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का विकल्प है। इथेनॉल को गन्ना, अनाज और खेती किसानी के अपशिष्ट से तैयार किया जा सकता है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में इसके इस्तेमाल के लिए किसी नए बुनियादी ढांचे की स्थापना की जरूरत भी नहीं है। साथ ही आज होने जा रहा फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च इस दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वो गाड़ियां होती हैं जो पेट्रोल या इथेनॉल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल से चल सकती हैं। ये गाड़ियां 100% तक इथेनॉल से भी चलने में सक्षम होती हैं। वहीं फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चलने के साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी होती हैं। इसमें फ्लेक्सी फ्यूल इंजन और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों होता है। ऐसे में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से इथेनॉल का इस्तेमाल भी होगा और साथ ही हायर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल सकेगी। ऐसे व्हीकल के इस्तेमाल से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स का इकोसिस्टम बनेगा और भारत इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन सकेगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अपनी तरह का ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है। खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के 3 मकसद हैं। पहला, भारत में BS6 तकनीक पर आधारित फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परखना। दूसरा, भारत की परिस्थितियों में इस तरह की गाड़ियों से होने वाले व्हील टू व्हील कार्बन एमिशन से जुड़े डेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को देना, साथ ही इसके सामाजिक आर्थिक पहलू को भी समझना। और तीसरा ये है कि भारत में इथेनॉल के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना। बतौर कंपनी टोयोटा कहती है, टोयोटा के लिए कार्बन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा लक्ष्य मोबिलिटी फॉर ऑल और लीव नो वन बिहाइंड के सिद्धांतों के आधार पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करना है। हमारा मिशन जितना हो सके और जितना जल्दी हो सके CO2 उत्सर्जन को कम करना है। इस पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी से भारत को 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने की COP26 में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, जिससे देश ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। Now, ladies and gentlemen, I would like to introduce and invite Shri Rameshwar Teli ji, Honorable Minister of State of Petroleum and Natural Gas and Labour and Employment, to kindly come to dais and share his thoughts. नमस्कार। आज की इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हमारे
माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र पांडे जी, हमारे कर्नाटक के माननीय मंत्री गुरुगेश निरानी जी, हमारे यहाँ उपस्थित दिल्ली के सांसद, पेट्रोलियम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रमेश बिदूरी जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न देशों के माननीय राजदूत और अधिकारीगण, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर प्रोफेसर गोविंद राजन जी एवं अन्य अधिकारीगण, टीएमके के एमडी मासा कांडू वासीमुरा किलस्कर जी, वाइस चेयरमैन श्री विक्रम किलस्कर जी एवं दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारीगण, पीयूसी के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उद्योग जगत के सम्मानित व्यक्तिगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं यहाँ पधारे हुए सभी गण्यमान्य अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ। भारत में इथानॉल जैसे जैव ईंधन का विशेष महत्व है। हम अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल और करीब 50% प्राकृतिक गैस आयात करते हैं। तेल और गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इथानॉल एक आवश्यक विकल्प है। साथ ही इसके किसानों को अतिरिक्त आय के साथ साथ ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं तथा प्रदूषण में कमी आती है। इथानॉल का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसका इस्तेमाल भारत के कई प्रभावशाली योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया आदि के अनुरूप है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा मंत्रालय और अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में इथानॉल के उत्पादन को और पेट्रोल में इथानॉल के मिश्रण को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें मिश्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इथानॉल पर जीएसटी का दरों को घटाकर निम्नतम दर लागू करना, इथानॉल उत्पादन के लिए विभिन्न तरह के सामग्री के इस्तेमाल को अनुमति देना, चीनी मिलों को उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देना आदि शामिल है। 2018 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जारी किए, जिसमें पेट्रोल में इथानॉल के 20% मिश्रण और डीजल में बायो डीजल के 5% मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य दिया गया। भारत सरकार के इस विषय पर लिए गए बहुमुखी प्रयासों का नतीजा है। हमने इथानॉल मिश्रण के 10% के लक्ष्य को इसी वर्ष अपने निर्धारित समय से करीब 5 महीने पूर्व जून 2022 में प्राप्त कर लिया है। इथानॉल मिश्रण जो 2013-14 में मात्र 1% के करीब था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निश्चय के कारण बढ़कर 10% को पार कर चुका है। इतना ही नहीं, मिश्रण के 20% लक्ष्य को अब 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया गया है। इस मुहिम को लगातार गति प्रदान करते हुए मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले तेल विपणन कंपनी ने पिछले वर्ष अगस्त में इथानॉल को कमी वाले राज्यों में समर्पित इथानॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए EOIL जारी किया। इसके प्रस्तावों को जोरदार प्रतिक्रिया मिली और कंपनियों ने 331 सफल आवेदकों के साथ दीर्घकालीन कारक सिग्नेचर किए, जो करीब 430 करोड़ लीटर प्रति वर्ष इथानॉल उत्पादन क्षमता के संयंत्र स्थापित करेंगे। इन आवेदकों को सरकार ने ब्याज संवेशन की सुविधा भी दी है। इथानॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
प्रधानमंत्री जीवन योजना शुरू की है, जिसके तहत 2G बायो रिफाइनरी लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। देश का पहला 100 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का 2G बायो रिफाइनरी इंडियन ऑयल द्वारा करीब 900 करोड़ रुपए के लागत से पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है, जो इस वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित टेक्निक पर आधारित यह संयंत्र सालाना करीब 2 लाख टन पराली का इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इससे क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण में कम होगा। इसके अलावा इस योजना के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भाटिंदा पंजाब में और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बारगढ़ उड़ीसा में और NRL द्वारा नुमलीगढ़ असम में 2G बायो रिफाइनरी का स्थापित की जा रही है। असम के नुमलीगढ़ में NRL द्वारा लगाया जा रहा संयंत्र एक अनोखा प्रयास है, क्योंकि यहाँ इथेनॉल उत्पादन के लिए बम्बू का इस्तेमाल किया जाएगा। 3,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संयंत्र 185 कैल प्रतिदिन इथेनॉल उत्पादन की क्षमता रखेगी। यह सालाना करीब 30,000 टन बम्बू का इस्तेमाल करेगा, जो क्षेत्र के करीब 50,000 ग्रामीण परिवारों से प्राप्त किया जाएगा। ये इथेनॉल उत्पादन के साथ साथ इन परिवारों को विकास का भी एक जरिया सिद्ध होगा। परिवहन क्षेत्र जैव ईंधन को अत्यधिक खपत करने वाला और कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र है। इसको देखते हुए हमारी सरकार ऐसी ईंधनों की दिशा में काम कर रही है जो स्वदेशी हो और आयात का विकल्प बन सके, किफ़ायती हो और प्रदूषण मुक्त हो। हमने बहुत कम समय में इथेनॉल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब हम 20% मिश्रण का लक्ष्य जल्द ही हासिल करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी हमारा पास ज़रूरत से ज़्यादा इथेनॉल उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के जरिए पेट्रोल के स्थान पर इथेनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 20% से 100% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य में भारत में इथेनॉल की क्षमता 20% मिश्रण से बहुत अधिक है। भारत में इस अतिरिक्त इथेनॉल का उपयोग फ्लैक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। भारत परिवहन के लिए विद्युतीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। फ्लैक्स फ्यूल सेल्फ चार्जिंग तकनीक के जरिए दोनों का लाभ उठाया जा सकता है। फ्लैक्स फ्यूल सेल्फ चार्जिंग वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों होते हैं। इससे इथेनॉल के अधिक उपयोग का दोहरा लाभ मिलता है और चार्जिंग मोड होने के कारण ज़्यादा ईंधन क्षमता भी मिलती है। इन वाहनों से 40 से 50% अधिक ईंधन क्षमता प्राप्त होती है, क्योंकि ये इंजन बंद होने के बाद इलेक्ट्रिक मोड में चल सकते हैं, क्योंकि फ्लैक्स फ्यूल सेल्फ चार्जिंग वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में निम्नतम उन्नत रसायन बैटरी का उपयोग होता है। अतः इसमें बैटरी संबंधी कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़े भावी जख्मों से भी बचा जा सकता है। इस प्रकार फ्लैक्स फ्यूल सेल्फ चार्जिंग वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के बहुत से फायदे हैं, क्योंकि इससे पुर्जों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन तेजी से किया जा सकता है और इस तरह बगैर बाधाओं के कम से कम जख्मियों से ऊर्जा के स्रोतों को बदला जा सकता है। साथ ही इससे जीवाश्म ईंधनों की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भी तेजी से कमी आती है और इथेनॉल आश्रित होने के कारण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलती है। आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी द्वारा इस फ्लैक्स फ्यूल सेल्फ
चार्जिंग इलेक्ट्रिक वाहन का इस परिसर में पायलट टेस्टिंग शुरू हो रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट से विश्व के पहले BS6B आधारित ऐसे वाहनों की संरचना में अत्यधिक सहायता मिलेगी। टोयोटा किर्लोस्कर अपने इस प्रयास में भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ गठबंधन करेगा, जिससे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार सृजन और अन्य बिंदु पर डाटा उपलब्ध हो सकेगी। विद्युत और इथेनॉल जैसे जैव ईंधन के मेल से चलने वाला ऐसा वाहन अद्भुत और ऐतिहासिक है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत की कल्पना के अनुरूप है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी व्यक्तियों का मैं विशेष रूप से माननीय श्री नितिन गडकरी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिसे आज हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन पाएंगे। आशा करता हूं कि भविष्य में आज शुरू किए जाने वाला ये पायलट प्रोजेक्ट भारत के ऊर्जा और उसके इस्तेमाल प्रणाली में सार्थक बदलाव लाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, Sri Rameshwar Teli ji, for your wonderful address. Ladies and gentlemen, though Sri Hardeep S. Puri ji, Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Housing and Urban Affairs could not unfortunately join us today due to his travel. However, the Honorable Minister has sent his wishes for today's event through a recorded message. Let's play that. Namaskar. I am sending this message from Houston, Texas in the United States, and I want to start by congratulating Toyota Kirloskar for launching a pilot project to test and drive flex fuel strong hybrid FFV, the car of the future. I am happy to learn that the technology used provides dual benefit of enhanced efficiencies of electrification and a holistic reduction of carbon emissions. Flex fuel vehicles provide opportunity of greater substitution of petrol by ethanol, as it is capable of using any amount of higher blends ranging from 20% to 100%. This is of great significance when the government is working tirelessly to ensure energy independence and security to its citizens, and biofuels hold tremendous promise in this regard. India has been able to achieve 10% ethanol blending in petrol ahead of the schedule, and now we are on the path to achieve a blend of 20% by 2025. When India has made incredible strides We would like to thank Sri Hardeep S. Puri ji for sending that message to us. Thank you very much, sir. For the next address, I would like to invite Sri Bhupendra Yadav ji, the Honorable Union Minister of Environment, Forest, Climate Change and Labour and Employment, who is leading our nation's efforts towards environment protection, fight against climate change. Under the Honorable Minister's leadership, the Environment Ministry has been making great strides towards conservation of the country's natural resources as well as the prevention and abatement of pollution. Please put your hands together for Sri Bhupendra Yadav ji. आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय महेंद्र पांडे जी, माननीय रामेश्वर तेली जी, माननीय मुरुगेश निरानी जी और विशेष रूप से हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ जापान एंड ब्राज़ील, और जो बधाई के पात्र हैं श्री विक्रम किर्लोस्कर जी और टोयोटा कंपनी, जिनके प्रयास से ये आज पहले
इस व्हीकल का लॉन्च हो रहा है। मैं आज के 12 साल पहले माननीय नितिन जी की टीम में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। उस समय नितिन जी का जो विज़न था एथेनॉल ब्लेंडिंग का लेकर के, क्योंकि मैं तो लीगल फील्ड का था तो समझ में इतना मेरे नहीं आता था, लेकिन लगता था कि कोई ये विषय है। आज 12 साल बाद पर्यावरण मंत्री के रूप में मैं बना हूँ और दुनिया भर की जलवायु परिवर्तन की मैं वार्ताओं में जाता हूँ, तो मैं नितिन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विज़न वो 12 साल पहले कहा करते थे, आज उसकी कितनी आवश्यकता है इसको दुनिया में हम देखते हैं। और ये इसलिए भी देखते हैं कि बिना एनर्जी के कोई जीवन नहीं है। हमारा प्रोग्राम हो रहा है तो कम से कम 20 एनर्जी के संयंत्र यहाँ पे लगे तब ये प्रोग्राम चल रहा है। स्क्रीन यहाँ पर है, लाइट यहाँ पर है, कैमरा यहाँ पर है, हमारे मोबाइल यहाँ पर है, पंखा यहाँ पर है। कोई चीज़ नहीं है जो बिना एनर्जी के नहीं चल सकती। दुनिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो एनर्जी के साथ आज हमारा जीवन जुड़ गया है, इस एनर्जी का उत्पादन कितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन, क्योंकि ये एनर्जी जो कार्बन एमिशन है ये दुनिया के लिए थ्रेट भी है। इस वीडियो में जब बताया जा रहा था, मैं विक्रम किर्लोस्कर जी को कह भी रहा था, ये सच है कि कार्बन एमिशन के मामले में हमारा जो दुनिया में हमारा कार्बन एमिशन है लगभग 5% के करीब है। हम 4th नंबर पे आते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या 17% है, हमारा कार्बन एमिशन 5% है। लेकिन जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जनसंख्या भी 17% है, पर उनका कार्बन एमिशन 60% है। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे कहा है, हम अपनी लाइफ स्टाइल को रखते हुए भी हम दुनिया में कार्बन का जो चैलेंज, जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, उसमें सॉल्यूशन बनेंगे, प्रॉब्लम नहीं। और इसलिए जो सबसे बड़ा परिवर्तन पिछले 8 सालों में आया है, सरकार का पॉलिसी इंटरवेंशन, सरकार का ईज ऑफ डूइंग का एटीट्यूड, सरकार की एग्जीक्यूशन की मंशा और टारगेटेड टाइम पे जो डिलीवरी है, इन सब चीज़ों के कारण आज भारत ने दुनिया में क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन का नेतृत्व किया है। और इसलिए जो 3 बड़े एक्शन फोरम जो दुनिया में हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सबसे पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा लीड आईटी, जिसमें भारत और स्वीडन जो दुनिया के हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री हैं उसमें कैसे कार्बन एमिशन कम हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी आगे आए, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिशन है उसको करने वाला सेक्टर है। तो इसमें जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निश्चित रूप से जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर माननीय नितिन जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो बधाई के विशेष रूप से पात्र है। आज सुबह अभी दिल्ली में आने वाले जो 40 दिन हैं, ये हमारे सबसे बड़े संकट के दिन रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोमास से हम लोग प्रभावित रहते हैं। अभी भी जो आज सुबह हम एस्टीमेट कर रहे थे कि 26 लाख टन ये पराली का जो है उत्पादन बायो वेस्ट के नाते होने वाला है। मैं फिर भी इस बात को मंत्रालय में संतोष के साथ कहना चाहूँगा कि लगभग अभी जो हमारी योजना बनी है, जिसमें बायोमास को जलाने की, डीकम्पोज़र की और उसके साथ ही साथ मशीन को करके उसको ख़त्म करने की, लगभग हम इस योजना पर पहुँचे हैं कि हम 24 लाख टन का मैनेज कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा कारक हो सकता है वो वेस्ट टू वेल्थ का हो सकता है। और इसलिए इंडियन ऑयल के हमारे रामेश्वर तेली जी बैठे हैं। पानीपत का जो हमारा प्लांट लगा है उसकी क्षमता 2 लाख टन की है। अगले वर्ष तक हम एक रोपड़ का प्लांट और तैयार होने वाला है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें हमने जिसको मस्ट रन स्टेटस दिया है वो इसी बात पे दिया है कि वो बायोफ्यूल का इस्तेमाल करे। और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई जो बायोफ्यूल पॉलिसी हम लोग लेकर के आए हैं, ये उसी दिशा की ओर है। और इसलिए जो अभी एक इस समय मैं देख रहा था,
क्लाइमेट चेंज के साथ साथ सरकारों की जिम्मेदारी है क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ है कि क्लाइमेट चेंज की इस परिस्थिति में हमारा जो नॉर्मल आदमी जो रहता है उसको डिग्निफाइड जीवन जीने का अधिकार हो। मैंने शुरू में कहा बिना एनर्जी के हम रह नहीं सकते, तो एनर्जी उस तक पहुँचे, वो एनर्जी ग्रीन एनर्जी जब होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट जस्टिस की ओर जा सकेंगे। यही कारण है कि जब 2015 में पेरिस में पेरिस के बाद भारत ने अपने जो 8 एनडीसीज दुनिया को सम्मिलित किए, उसमें 5 एनडीसीज हमारे क्वालिटेटिव थे, 3 हमारे क्वांटिटेटिव थे। जो हमारे क्वालिटेटिव थे वो हमारी जीवन पद्धति, जो एडेप्टेशन के हमारी प्रैक्टिसेस है उससे जुड़े हुए थे। 3 जो हमारे क्वांटिटेटिव थे उसमें रिन्यूएबल में 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना, हमारा कार्बन सिंक बढ़ा करके 33% हमारा करना, और उसके साथ ही साथ जो कार्बन जिसको कार्बन उत्पादन कहते हैं रिन्यूएबल की ओर हमारे 40% डिपेंडेंसी की ओर जाना। अभी जो भारत ने रिवाइज एनडीसी जो दिए हैं उसमें मुझे बताते हुए खुशी भी है, गर्व भी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार भारत में है उस सरकार ने दुनिया के उन चुनिंदा देशों को में भारत को शामिल किया है जिन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो घोषित के लक्ष्य है उसको समय से 9 साल पहले पूरा करने का काम किया है। और रिवाइज जो एनडीसीज हैं उसमें हमने भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी को 50% बढ़ाने का काम किया है। ये सब इसलिए हो पाया है जब पॉलिसी इंटरवेंशन के साथ एक संकल्पबद्ध सरकार काम करती है, और सरकार में ऐसे विजनरी नेता भी होते हैं जो सरकार में आने के 10 साल पहले, मैं नितिन जी को के सामने ही कह रहा हूँ कि जब सरकार में नहीं आए उससे पहले जो विज़न को लेकर के राजनीतिक संघर्ष करके जब वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से अपनी दूरदृष्टि और संकल्पबद्धता के साथ उनको क्रियान्वयन करते हैं। मैं पुनः टोयोटा किर्लोस्कर को बधाई देता हूं और माननीय नितिन जी को भी बधाई देता हूं कि उनके इंटरवेंशन से ये इतना बड़ा परिवर्तन हम देश में क्लीन एनर्जी के सेक्टर में देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Shri Bhupendra Yadav ji. Next, I would like to introduce and invite to dais Dr. Mahendra Nath Pandey ji, Honorable Minister of Heavy Industries. Under the leadership of Honorable Minister Dr. Pandey ji, the Ministry of Heavy Industries has taken major initiatives for the growth of automotive industry. The FAME incentive scheme and recently introduced PLI scheme by the Ministry are strong examples of some very important policy interventions by the Ministry with the Honorable Minister's leadership. Let's give him a big round of applause. आज के इस पायलट प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग के मौके पर हम सबके अत्यंत सम्मानित हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता और माननीय केंद्रीय मंत्री और इस सब पहल के प्रति के जनक माननीय श्री नितिन गडकरी जी, अभी हम जिनका बड़ा सारगर्भित विचार सुन रहे थे, ऐसे माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, और ह्यूस्टन से अपना मैसेज दिए हमारे आदरणीय हरदीप पुरी जी, उनको भी सम्मान है। कर्नाटक के माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित मुकेश निरानी जी, टोयोटा के श्री विक्रम किर्लोस्कर जी और टोयोटा के ई मासाकोजी सुपुरा जी जो हमारे एमडी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर हैं। इस मौके पर उपस्थित माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी, सम्मानित आदरणीय राजदूतगण और अन्य सम्मानित गणमान्य अतिथियों और मीडिया के साथियों, मैं माननीय भूपेंद्र जी की उस बात को जो 12 साल से जुड़े विषयों को उन्होंने माननीय भूपेंद्र जी ने माननीय गडकरी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जो संदर्भ दिया, मैं उसी बात को स्मरण करते हुए
मैं भूपेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस बात का आज स्मरण कराया हम सबको कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके जितने प्रवास होते थे माननीय गडकरी जी के, तो पॉलिटिकल स्पीच के साथ साथ यूथ को, सबको, पार्टी जनों को ऐसे ही विजनरी चीज़ों को वो देते थे जिस पर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में उनकी पहल पर और एक कारगर भूमिका के साथ गडकरी जी उस बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी बात को जोड़ते हुए मैं भूपेंद्र जी को बताना चाहूँगा, लखनऊ में इन्हीं विषयों को माननीय गडकरी जी ने एक बार अपने स्वागत संबोधन में निराला नगर माधव कुंज में जब संबोधन दे रहे थे, पहला स्वागत, एक वरिष्ठ नागरिक इतना प्रभावित हुआ कि भीड़ में से कूदते हुए कहा कि आप कहाँ थे, अब तक देश को है विजन देने वाला। अब बड़ी मुश्किल से मैंने उस नागरिक को आपसे लाके हाथ मिलवाया लखनऊ में। तो आज हम सब उन सब चीज़ों को याद करते हुए आज गडकरी साहब को और इससे पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े बेंगलुरु के वैज्ञानिक संस्थान और किर्लोस्कर विक्रम जी को और टोयोटा के हमारे जापानी आदरणीय लोगों को अभिनंदन देता हूं। हमारा मंत्रालय खुद आज इस ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और ईवी व्हीकल्स को लेकर के, और हमारी पीएलआई ऑटो के माध्यम से भी कई कारगर पहले है, उसका रिस्पांस भी इंडस्ट्री सेक्टर से बहुत अच्छा जा रहा है। खास करके ग्रीन एनर्जी के फील्ड में जहां भारत आज की दुनिया में लिथियम बैटरी के निर्माण में आज हम आयात पर निर्भर हैं, लेकिन हमने माननीय मोदी जी की अगुवाई में जो हमारे मंत्रालय ने पहल की और 18,100 करोड़ की पीएलआई को जो लॉन्च किया, मैं इस मौके का सदुपयोग ये बताने के करना चाहूँगा कि 50 गीगावाट के इस ग्रीन एनर्जी के फील्ड का एक महत्वपूर्ण कारक है। इस लक्ष्य पर बढ़ने के लिए कल्पना थी कि लोग शायद 50 गीगावाट तक इंडस्ट्री पार्टनर्स, इंडस्ट्री प्लेयर्स आएँ इसमें, लेकिन शायद की जगह आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इतना रिस्पांस मिला है आज के इस चैलेंज को कि 128 गीगावाट के इन्वेस्टमेंट के साथ प्रपोजल आए। हमारे परीक्षण पर 108 गीगावाट आज हमने एक्सेप्ट होने लायक प्रपोजल थे, जिसमें हमारा टारगेट 50 का ही था। हम उस सीमा तक चले। जब उसमें हम आगे बढ़े बड़े तेज़ी से, तो एक बार समीक्षा के दौरान मैंने पूछा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राजेश एक्सपोर्ट हो, चाहे ओला हो, चाहे रिलायंस हो, कि ये तो सरकार ने एक इनोवेशन किया है, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा खुद का टारगेट इसके अलावा 75 गीगावाट हिंदुस्तान में बनाने का है। तो निश्चित तौर से जिस दिन 75 गीगावाट उनका और 50 गीगावाट गवर्नमेंट के, और 2 साल में इसको हम सीधे प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं पब्लिक डोमेन पर, उस दिन हिंदुस्तान इस लिथियम बैटरी में आज आयात की कठिनाइयों से मुक्त होगा और एक्सपोर्टर भी बनेगा। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज हम इस मुकाम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उस दिशा में आज का ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये आज जो ये फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड, इन विषयों पर जो आज इस आयोजन के अवसर पर मैं बहुत विस्तार में न जा करके मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज जिसका उल्लेख पहले भी हो चुका है, समय से हम ये एथेनॉल की ब्लेंडिंग में हम समय से पहले सफल हुए। हम समय से पहले उसमें भी गडकरी जी की पहले लगातार कारगर रही, और जैसा माननीय भूपेंद्र जी बता रहे थे कि हम दुनिया में और देशों से एक जिम्मेवार देश के रूप में आज इस कार्बन उत्सर्जन की दिशा में अपने देश के कदमों को लगातार बढ़ा रहे हैं। उसी दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम यह है, और इस कदम में मैं आज टोयोटा किर्लोस्कर तथा IISc बेंगलोर के बीच जो MOU हो रहा है, इस कार्बन एमिशन इन व्हीकल्स डाटा एनालाइज की जो इसमें सुधार कर पहलें की जाएंगी, उसका स्वागत करता हूं, अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। और आज मैं किर्लोस्कर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब इनके प्लांट का मैंने विजिट किया था
तो इससे जुड़ी चीज़ों को खुद इन्होंने वहाँ हमें अवगत कराया था। काफ़ी एडवांस इसमें ये काम कर रहे हैं। मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं जेएनटी को बताना चाहूँगा कि हमारे भारत के ऑटो फील्ड के किर्लोस्कर जी वगैरह जो पहल कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य भी हमारे प्रतिष्ठान इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। एक जिम्मेवार देश के रूप में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस मौके पर मैं आप सबके बीच में ये शेयर करना चाहूँगा कि जो विज़न COP 26 में और जिस पर माननीय भूपेंद्र जी का मंत्रालय बहुत ही गहराई से काम कर रहा है, और जो वचन दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे उन्होंने पंचामृत का जो वचन दिया कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी हम 2030 तक ले जाएंगे, 50% एनर्जी आपूर्ति सेकंड वचन रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक पहुंचाएंगे, ये जो उनका मंत्र है। और तीसरा, कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन 2030 तक कम करना है हमें। और चौथा, कार्बन इंटेंसिटी को हमारी अर्थव्यवस्था में 45% तक 2030 तक लाना है। और पंचामृत का 5वां अमृत वचन 2070 तक नेट जीरो एमिनेशन प्राप्त करना है। निश्चित तौर से पर्यावरण मंत्रालय, हमारा भारी उद्योग मंत्रालय और सबसे बढ़ के नई पहलों के साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लीड करते हुए जो लगातार इनोवेटिव आइडिया के साथ हमारे माननीय नितिन गडकरी साहब, जो आज एक इस दृष्टि में आइकॉन के रूप में देश में सम्मान पाते हैं, वो लगातार जिन पहलों को आ रहे हैं, निश्चित तौर से हम आज भरोसा करने में और देने में कामयाब हैं कि माननीय मोदी जी का पंचामृत का वचन और दुनिया को दिया गया भरोसा शायद दुनिया के अन्य देशों से सबसे पहले भारत प्राप्त करेगा। इसी विश्वास के साथ आज की इस पहल को बधाई और शुभेच्छा देते हुए आप सबको आदर व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। Thank you very much, Dr. Mahendranath Pandey ji, for your address. Now I would like to invite to dais our Honorable Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, who needs no introduction, a visionary with innovative approach, a strong and dynamic leader, and you all know him very well. Please put your hands together for Shri Nitin Gadkari ji. मैं ऑनरेबल कलीग डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय रामेश्वर टेली जी, हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल एम्बेसडर फ्रॉम ब्राज़ील, फ्रॉम जापान, all our secretaries of different departments, respectable dignitaries, my colleague from Parliament and who is the chairman of Petroleum Committee, Ramesh Vidudi, and all dear friends. Our Prime Minister's dream is to make Indian economy of $5 trillion. And one of the important thing is, today as far as our GDP growth is concerned, 22 to 24% is coming from manufacturing sector, 52 to 54% is from service sector, and 12% is from the agriculture sector. Actually, for Atmanirbhar Bharat, we need to increase the growth rate in agriculture in rural India. We have 124 aspirant districts which are socially, economically, educationally backward, and their contribution in our growth is very negligible. And this is also one of the reasons, by making these biofuels and alternative fuel technology, 100% we are going to increase the growth rate in agriculture sector. That is one of the important thing which is related with the biofuels. Today in Indian situation, we have sugar surplus. Our need for sugar is 280 lakh ton and our production is 360 lakh ton. And previous year balance was 60 lakh ton. Honorable Secretary is here. And today, because of the Ukraine and other thing, I was telling to Ambassador of Brazil that God bless you, because
your production of sugar is reduced. That is the reason that we are laughing. Our industry is laughing because we have export of 100 lakh ton. It is only because that there is shortage of sugar in Brazil. Next year the acreage is going to increase. And my estimate is it is going to be at least 340 lakh ton of sugar. Because sugarcane is the only crop where farmer is getting some money. Otherwise, all crops, they are very risky. And that is the reason that we cannot stop the plantation of the sugar. And the sugar production is going to increase. So sugar surplus is a problem. Rice surplus is a problem. Corn surplus is a problem. And even everywhere the price of the food grain as compared with the MSP, the market price is less. I don't know, but approximately we pay because of MSP more than 1,40,000 crore to the farmers, and we are purchasing. We don't have that much capacity for godowns. Even in Haryana and Punjab, it is difficult to stock rice. It is very difficult. So there is one problem that we have surplus of food grain, surplus of sugar, and now the technology is available that Honorable Chaudhary ji is here from Praj, that bio syrup, that they can convert sugar into syrup and that can be stored up to a year. So we can reduce the production of the sugar and we can make ethanol from that. We can make ethanol from corn, rice, and even the most important thing which Honorable Teli was telling, and I will request Honorable Minister Bhupendra Yadav ji, that today we have got crores hectares of land as a waste land. There was a committee on the chairmanship of Mohan Dharia. The report is there. So if we can plant bamboo there, the Bhima bamboo from Karnataka and the bamboo species are giving 200 ton per acre after 2 years. And there is a successful plant in Assam. They are making bioethanol from bamboo. It's sold by Indian Oil. Only we need to reduce the capital cost. So for energy point of view, we don't need to import energy. We can export the energy. There are many people asking me the question that you are talking about electric, you are talking about methanol, you are talking about ethanol, you are talking about bio-LNG, bio-CNG, you are talking about green hydrogen, and what will happen? तो मैं कहता हूँ ये समुंदर है जिसमें जितना दम है पटक ले तो भी पेट्रोल डीजल आने ही वाला है. Because we have got the import of 16 lakh crores. And still the ethanol we are making and dodging to the policy, we are making 400 crore liter, either probably it can increase up to 450 crore liter. And there is a lot of confusion in the mind of the people that actually my suggestion is we have an ample capability, we encourage the people at least in flex engine, if we can use in place of petrol, ethanol, our requirement will be 4,000 crore liter. Already the Toyota has started now, we are going to launch this car. The TVS, Bajaj and Hero, already their two-wheeler is already ready with flex engine. And one of the important thing with I am giving thanks to Kirloskar, Vikram Kirloskar, that this is not only ethanol, it is 100% bioethanol we are using, generating power. 40%. Na? So 40% power is generating. So if you can calculate the cost of petrol per kilometer and cost of ethanol per kilometer, you just understand the economics. So it is very important that always I am telling to the people that one thing, we need proven technology, economic viability and availability of raw material, and at the same time marketability. So there is no problem, don't need to advocate anything for electric ethanol because it is economically viable. And most important thing is we are creating pollution, and pollution is a big concern. And our transport sector is contributing the major share of because of the pollution. Honorable Prime Minister, Honorable Bhupendra Yadav ji, we have all have dream for carbon emission. And that is the reason that we need to encourage electric, ethanol, methanol, biodiesel, bio-CNG, bio-LNG and green hydrogen.
I will suggest Honorable Minister that I have got hydrogen car also from Toyota. The name is Mirai, means Bhavishya. So now we can make hydrogen from organic waste and wastewater. When we can make, that is to be green hydrogen, but we can make hydrogen from petroleum, that is brown hydrogen, and from coal is black hydrogen. I will request you, if you can make the policy in our municipal corporations, we have got lot of organic waste is available and wastewater is available. In my own constituency, we are selling our wastewater to government of Maharashtra for power generation, and we are getting 300 crore rupees royalty per year. So my suggestion is, we can make a scheme. There will be a rooftop solar, because 70% of the cost in green hydrogen is power. And with that green power, we can make the green hydrogen, and my dream is to make the cost of green hydrogen $1 per kg. It is 80 rupees, it is difficult, but if it can possible, so it can give the average of 450 kilometers. So it totally changed the scenario. So today I am giving the example. For running diesel bus in best, the cost is 115 rupees per kilometer. Now running ethanol bus 100% from Scania, that is to be 79 rupees per kilometer. And we have just received the tender for electric buses. Non-AC 39 rupees per kilometer and AC for 41 rupees per kilometer. I just got appointed to launch electric double-decker bus in Mumbai. The cost is coming 60 rupees per kilometer. So we can reduce the bus rate by 20% and offer all air-conditioned buses to the people of India. It can possible. Today we have 150,000 buses in the country. And because of this economics, if we can make the luxury buses, we will have the order of 10 lakh electric buses in the country. Just like European countries, we can start double-decker electric air-conditioned buses for tourism. So economic viability is there, and electric is the indigenous fuel, no pollution. So the policy is import substitute, cost-effective, pollution-free and indigenous. And the most important angle is, in our growth rate for Atmanirbhar Bharat, we need to increase the agriculture growth rate. And I am confident that if you can encourage the biofuel, we can increase the agriculture growth rate by 6 to 8%. And that is exactly the need of the country. Even here is lot of people, Mr. Karad, Finance Minister Karad's son is here. He is making 6 plants, making bio-CNG and bio-LNG from rice straw. The 5 ton of rice straw is giving 1 ton of bio-CNG. 20 ton of this press mud is giving 1 ton of CNG. And 9 ton of cotton straw is giving 1 ton of bio-CNG. We can make bio-LNG because it is easy to transport and convert into bio-CNG. I have got my own tractor on bio-CNG. My saving is 1 lakh rupees per year. But now the problem is that ethanol is available in Uttar Pradesh, available in Maharashtra, available in Karnataka. Nurani ji is here. His sugar factory's production is 28 lakh liter per day. Na? How much? 25 lakh liter per day is making ethanol. So now the problem is that for Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra, flex engine, there is no problem. There will be no transport cost. But taking ethanol from Maharashtra to Bengal is a problem. That is the problem our food ministry is facing. So by creating flex engine, it resolves the problem. The most important thing which I will request you, regarding environment ministry, we need to have formulate the policy waste to wealth. Bhupendra ji already he knows that no person is waste and no material is waste. It is depending upon the appropriate leadership and appropriate technology that you can convert waste into wealth. And the other important theory is conversion of knowledge into wealth. Actually, 15 days before I was with Honorable Ambassador of Brazil, and there was a big conference. And now we have aviation fuel, thanks to Mr. Chaudhary ji. We can make aviation fuel and we can reduce not only pollution, but we can increase the economic viability of aviation industry. The one of the important reason for breaking down of Jet Airways and Kingfisher was the rise in the fuel price.
So if indigenous fuel is there, we can resolve the problem. There are some changes. We need some new technology by which how we are going to reduce the cost. And even in Brazil, there is a bioplastic from ethanol that is biodegradable. And that biodegradable plastic is the future. Already 2-3 companies in Brazil, they are making bioplastic. And even this Toyota car and all this car also, you can use that plastic. So this is the time that our agriculture, we can diversify agriculture towards energy and power sector. अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बना है. So the most important thing is pollution. That is very important that we need to reduce the pollution. And second thing is economics. The economic challenge of it is the import of 16 lakh crore. If we can reduce it, it can be a great achievement as far as the growth of the country is concerned and to create more employment potential in the rural and agriculture and tribal India. And also at the same time, the ecology and environment point of view, it is really going to reduce the pollution. So today there are some problems are there. I will request Honorable Minister of Petroleum that now we have got the technology because the ethanol average compared with the petrol, it was less. 1 liter of petrol equal to 1 liter 300 ml of ethanol. So actually once I got information from Russia that they have got the proven technology that they can convert ethanol into the same average of the petrol. So Mr. Ram Kumar is here from Indian Oil Laboratory, Faridabad. So we have a meeting with him. मैंने उनको कहा कि गाजर की पुंगी है, बोले आई फील इट्स इम्पॉसिबल. मैंने बोला बजा के देखो नहीं तो इनको छोड़ दो. तो वो एक्चुअली दैट रिसर्च अभी प्रूवन हो गया और उनने एक्सेप्ट किया. तो अब एवरेज ऑफ पेट्रोल एंड एवरेज ऑफ इथेनॉल इज सेम. सो बाय दिस नाउ दिस इज द टाइम आई विल रिक्वेस्ट पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी, we can open ethanol pumps. Already Indian Oil opened 3 ethanol pump in Pune. But now even all the people, sugar factories, they can open ethanol pump. And if they can allow all private company for using this technology, for then giving some petrol to them, because without that they cannot make that ethanol. So if the policy will be there, in our country we will have thousands of pump, lakhs of pump, petrol pump, their ethanol will be available, and then it will encourage the people like Toyota, Kirloskar and other also are in the process to making flexi engine. So it is going to replace petrol. So my suggestion is the day will come that immediately, I always feel that within 5 years we will replace petrol. It's very difficult. But I always telling people the impossible word, it means that I am possible. And in my experience, probably whatever I declare, everything is going to happen. That is to be track record related with me. That's the reason if we all stakeholders decided that this petrol and diesel is so hazardous, not only economic point of view, creating pollution, and this is the time that the electric is so popular. I remember when I start the electric vehicles, scooter and buses, lot of journalists asking me the question, गाड़ी बंद हो गई तो क्या होगा, चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, रास्ते में दुनिया भर के क्वेश्चन, अब कोई नहीं पूछता. Because electric, there is a waiting list for electric car now. People are coming to me that give the letter to Tata company that we need electric car. So lot of 400 startup, new talented young engineers started manufacturing of two-wheeler, electric two-wheeler. All are doing excellent jobs. Huge potential is there. And already in the country, the automobile industry size is 7.5 lakh crore, out of which 3.5 lakh crore is export. The Bajaj, TVS, Hero, all they are 50% of their two-wheeler they are making exports. And this is the industry which is giving maximum employment potential in the country. This is the industry which is giving maximum GST to central and state government. This is the industry which contributes in our growth rate. And our dream as a transport minister to make this industry of 15 lakh crore within 5 years and #1 manufacturing hub in the world. And today it is possible. I just got approval to launch the Mercedes car, full electric. Now people are everywhere, every company. Now I remember one of the automobile manufacturing giant in Pune was telling me when he was talking all the thing, we never have the feeling that it is going to happen. But now we miss the bus. So those who are taking the technology as early as possible,
giving all alternative fuel products in the market, they will be beneficial, and those who are late, they will face the consequences. I am happy that some of the Indian companies' share in automobile manufacturing increased by 5%. It is only because of electric. And those who are late, they have to face the problem for that. So the technology is open and competition is there. Survival of the fittest is the rule. Those who have good quality and good rate, they can capture the market. But at the same time, with the new technology, we are going to reduce the pollution and creating positivity for our economy. And it is most important thing, by reducing pollution, we can fulfill the dream of our Prime Minister of Atmanirbhar Bharat by increasing growth rate, agriculture growth rate by 6 to 8%. I am really happy because of Vikram Kirloskar has taken initiative, and first of all, the green hydrogen car also from Toyota at that time we launched. Now today, the ethanol flex engine car is also we are going to launch. I am really happy for his all initiative. Also, your brother also giving me the generator set on 100% ethanol from Pune. That is also, I am going to trying my level best to convince IT minister that in the generator, in the IT tower, we are using 2000 crore liter of diesel. We can convert all the generator with a very, very negligible cost, convert into 100% bioethanol, and we can save a lot of economy point of view and also the pollution. So here, Honorable Bhupendra Yadav ji is here. His commitment for ecology and environment, I feel that in due course of time, our rural agriculture, tribal area, our wasteland, and our agriculture will be encouraged for creating green production in the country by creating economy, at the same time creating employment potential, and that will be really a dream for Atmanirbhar Bharat. Once again, I am giving my thanks to all the stakeholders, and I feel that today's day is very important in the history of Indian automobile industry, and I feel that I'm giving thanks to you because the Toyota has taken the initiative, and you are one of the things I always appreciate. No CO2. It is only possible that if we are going to actually demolish this petrol diesel lobby or anything, without that we cannot resolve this problem of pollution. I am really happy. I am giving my special thanks to you and Vikram Kirloskar. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much, Sri Nitin Gadkari ji, ever so inspiring and energizing. Let us all have a huge round of applause for all the dignitaries. I would request you to kindly come a step forward for a group photograph, everyone. And I would request all our media friends to kindly be friendly with each other. Everyone wants a photo of all the dignitaries together. So our friends who are in the front can probably just lower down themselves or sit and take a photograph so that the cameraman at the back can also get a good view. Thank you very much. Now I would request our honorable ministers and key dignitaries to kindly proceed towards the flex fuel strong hybrid electric vehicle at the back for a brief technology explanation and their experiential drive. We have our teammates to escort all the dignitaries at the back side towards the flex fuel strong hybrid electric vehicle. I would request rest of you to please be seated. By the time they're walking, you can use that filler to kind of fill up. Sure, I can. Ladies and gentlemen, flex fuel vehicle technology provides greater substitution of petrol by ethanol as it can use higher blends of ethanol mix beyond 20%. Since India has the potential of huge ethanol, India can learn from global experience of benefiting from use of flex fuel vehicles. India is also encouraging electrification of transportation. We need not choose between these two pathways, and we can leverage advantages of both through the flexi fuel self-charging strong hybrid electric vehicle technology.
An FFV SHEV has both a flexi fuel engine and an electric powertrain, which gives it the ability to provide dual benefit of higher ethanol use and higher fuel efficiency. Greater FFV SHEV offtake can help retain existing ICE investments, create EV parts ecosystem, and give India global technology leadership. The dual powertrain of FFV SHEV provides higher fossil fuel savings and has the lowest carbon emissions on a well-to-wheel basis, as can be seen from the Brazil experience, which in India is expected to be much lower, as our farming is far less mechanized. Global experience shows any new technology introduction can only succeed once there is consumer acceptance. ये आज का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का 2047 की तरफ बढ़ने का एक कदम है। आज की डेट में हम 63% जो है हमारा क्रूड इंपोर्ट होता है और हम इस बायोफ्यूल के जरिए इस क्रूड इंपोर्ट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो एथानॉल है ये देश की दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में अल्टरनेट फ्यूल की तरह यूज किया जा रहा है और देश में हमारे पास इस एथेनॉल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और यह केवल E20 तक के लिए नहीं, उसके ऊपर भी हम फ्लेक्सिबल फ्यूल लॉन्च करने के लिए भी हमारे पास में सफिशिएंट मात्रा में रॉ मटेरियल उपलब्ध है। 2025-26 में जब हम E20 अचीव करेंगे तब हम 30,000 करोड़ रुपए का फॉरेक्स सेविंग कर पाएंगे। और ये क्योंकि कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है, जितना इसमें कार्बन उत्सर्जित होता है उतना का उतना उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है, उसके कारण से ये वातावरण के लिए भी अनुकूल है। इसके कारण से हमारी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसमें और जॉब क्रिएशन में भी काफी फायदा होगा। आज जो हम व्हीकल लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी विशेषता ये है कि उसका जो इंजन है वो एडवांस इंजन, फ्लेक्स इंजन है और उसमें इलेक्ट्रीफाइड बैटरी, कंट्रोलर और मोटर, सारी इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल बनाने के लिए जो भी पार्ट्स चाहिए वो इसके अंदर है। उसके कारण से यह गाड़ी 40% ईवी और 60% एथेनॉल पर चलेगी, जिसके कारण से हम पेट्रोलियम को बिल्कुल खत्म कर पाएंगे। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी इंप्रूव होती है और वही नहीं, उसके कारण से कार्बन उत्सर्जन भी बाकी सभी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में सबसे कम है। इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम अर्थव्यवस्था को, वातावरण को और इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी को, तीनों चीजों में विन 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 को हम प्रमोट कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज हमारी जो बायोफ्यूल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको आज हम चलाकर उसको इनॉग्रेट करेंगे। धन्यवाद। अरे क्या कर रहे हो? कार तो दिख ही नहीं रही यार। कैमरामैन थोड़ा पीछे आ जाओ यार, गाड़ी तो दिख जाने दो हमें। गाड़ी तो देखने दो सर। गाड़ी यार कहाँ तुम यही कहा कि एथेनॉल से चलाना गाड़ी काफी हट जाए यार, कहाँ जाए ओ भाई, तू हर वक्त सामने आ जाता है। एथेनॉल से अगर काम आय भी बढ़ेगी, साथ ही साथ पेट्रोल की एक्सपोर्ट करते हैं वो भी अरे सर पीछे, सर इधर आ जाइए। बहुत अच्छा आप अकेले ही शोर मचा रहे हो। कोई नहीं भाई साहब, एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से इन लोगों को हटवाइए जो कि
बैठे गाड़ी में थोड़ा जगह दे दो सर। आप ये बताइए ना, आपने अपने लोग खड़े कर दिए, फोटो कहाँ से शूट करेंगे हम लोग? अरे आप बाहर निकलेंगे तो कुछ दिखे तो सही आगे। आप लोग अपनी करवानी पिक्चर तो उनको हटवा दिए वहां से। नहीं आप एक
please, all you ladies and gentlemen, on behalf of Toyota Kirloskar Motor. Toyota cherishes its relationship with each one of you and looks forward to your participation and good wishes in our future endeavors. Ladies and gentlemen, please do proceed for lunch. It's been a pleasure hosting you today. Have a great day ahead. Three of which add up to zero environmental impact.